तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्लैट अर्थ डेविड वाइस। और ये वेस्टर्न जगत में काफी तगड़े फ्लैट अर्थर हैं, और इनकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको फ्लैट अर्थ की सच्चाई मालूम चली है। ये हमें बताएंगे, कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे फ्लैट अर्थ से संबंधित, और ये इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे और मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। I'm going to show you another one, and I'm going to do short little sentences, and you're going to repeat them really fast, okay? So here's a spot in Illusia, France. We're looking out, and 175 miles away is Mount Canigou. Go ahead. 175 माइल माउंट कैनगू है, जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा होगा। Can't see it, and because it's supposed to be behind the curve, but you can't see it. Go ahead. ये मतलब इनका जो तथाकथित जो कर्व है उसके पीछे छुप चुका है अभी, लेकिन इसलिए आपको नजर नहीं आता, लेकिन अभी देखना। The reason you can't see it is because the light that's bouncing off of it isn't strong enough to push through 175 miles to your eyes. Go ahead. तो ये हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मतलब वो 175 माइल तक भी हमारी आंखों में जा सके। But twice a year, the sun lines up with the viewing spot and the mountain. And when it goes beyond the mountain, it backlights the mountain. And there it is. The very top of this mountain should be over a half a mile below the curve. तो इसमें आप देख सकते हैं कभी कभी 2 बार ऐसा होता है साल में कि जो ऐसा व्यू मतलब पॉइंट बनता है कि जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो पीछे से रिफ्लेक्ट होकर हमें आंखों तक नजर आ पाती हैं। तो आप देख सकते हैं 175 माइल ही हमसे दूर है, उसके बावजूद भी हमें नजर आ रहा है। So this is just the sun going beyond the mountain. Just like if my hand was above your eye level, which it is, but in the distance, it kind of looks like it's at your eye level. And when the sun goes away, it's not going down, it's just going beyond something that's above your eye level. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सूर्य जो है खाली पीछे जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि वो नीचे जा रहा है। तो ये परसेप्शन का खेल है सारा। Very good. Here, let's go over this. We'll go this. All right. So this is a grid of perspective. The ground goes up, the top goes down, the sides go in. This is how our eyes work. Go ahead. ये हमारा पर्सपेक्टिव का ग्रिड है। आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें हैं ऊपर से भी नीचे की तरफ मतलब से इधर जा रहा है, नीचे से भी इधर जा रहा है और साइड से भी इधर जा रहा है। ये तरीका है, ये ग्रिड दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारी जो ह्यूमन आईज है वो देखती हैं। So we have a viewer. His eye is right here at this level. Go ahead. तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर है, इसकी आंखें इस लेवल पर हैं और ये सेंट्रल जो लाइन है उस लेवल पर है। So I put a mountain in front of him, and this mountain is thousands of feet above his head. Go ahead. तो ये जो आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक माउंटेन की तस्वीर लगा दी जो कि थाउजेंड्स ऑफ फीट इसके सिर के ऊपर निकल रहा है जो माउंटेन। All right. I have the sun here, and I move the sun just away, and it looks like it's going down due to perspective, but it's just going beyond the mountain. So right now, you know that the sun isn't below the horizon, it's just beyond the mountain. Go ahead. तो इसमें आप देख सकते हैं ग्राइड ग्राइड की मदद से इन्होंने क्या करा, अभी जो सूर्य दिखाया वो खाली इन्होंने पीछे की तरफ यानी कि अवे करा, इस ऑब्जर्वर से खाली अवे करा, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ऐसा नजर आ रहा है कि भाई ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये तरीका है जिससे हमारी आंखें देखती हैं। So we'll leave the sun right where it is, where he is, and let's say we just move that mountain into the distance. Now I'm not lowering the mountain, I'm just moving it away, and due to perspective, it gets smaller, right? Fill in the sides, fill in the foreground. And so now this mountain right here is thousands of feet above his eye level, but to him, it looks like it's at his eye level. Go ahead. तो इसमें आप देख सकते हैं ये खाली इस माउंटेन को हमने दूर करा है, इससे काफी दूर ले गए हैं, लेकिन अब दूर ले जाने की वजह से हुआ क्या कि भाई असल में तो माउंटेन मतलब इसके सिर से काफी ऊंचा है, लेकिन क्योंकि बहुत दूर से ऐसा देख रहा है तो इसे ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इसके सिर से भी नीचे है माउंटेन। तो ये तरीका है कि पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है। So then we can let the sun continue its journey away. It goes away, just following that line. And it's not going down, it's going beyond. You have to remember that this horizon is at his eye. It looks like it's at his eye level, but it's thousands of feet above his head. And the sun looks like it goes down. Go ahead.
तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो होराइजन है जो इसके आई लेवल पे नजर आ रहा है, लेकिन असल में इसका जो टॉप है माउंटेन का, ये मतलब असल में तो बहुत ऊंचा है ना इससे, तो लेकिन ये दूर है तो इसलिए हमें ऐसा छोटा नजर आ रहा है। और जब आप देखते हैं सन जब इससे दूर जा रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो नीचे जा रहा है। So हम्म। so now we'll add clouds. So now we have the cloud deck, which is above the mountain but below the sun. Go ahead. तो आप देखें इन्होंने मतलब इस चित्र में क्लाउड्स को भी ऐड कर दिया है, जो कि माउंटेन से आगे है, माउंटेन से ऊंचे हैं। So as the clouds go into the distance, they also compact into what appears to be his eye level. But we know that this mountain here is thousands of feet above his head, and these clouds are thousands of feet above the mountain, but they all come together from our perspective. Go ahead. तो आप देख सकते हैं जैसे ये जो क्लाउड्स का तस्वीर आपको समझ में आ रही है, ये इसमें देख सकते हैं जैसे जैसे दूर के क्लाउड्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि हॉराइजन में मिल गए, मतलब कंप्रेस हो गए। लेकिन हकीकत हमें पता है कि भी हकीकत में तो ऐसा है नहीं। हकीकत में तो जो माउंटेन है वो भी इसके सिर से बहुत ऊंचा है और जो क्लाउड्स हैं वो भी इसके सिर से बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी आइज ऐसा देखती है कि दूर की वस्तु को जब देखती है तो कंप्रेस कर देती है चीजों को। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। So now we just move the sun, let it go away, not going down, it's just going away. And you'll see that it goes beyond. Now, this horizon here, remember, this mountain was a couple thousand feet above his head, but we also have a atmospheric cloud deck horizon, or just the atmosphere itself becomes opaque and it creates another horizon thousands of feet above the mountain. But again, it still looks like it's at his eye level in the distance. So the sun, which is above that, is just going into the distance, going beyond it. And you've been brainwashed into think that we're on a spinning ball and it's going down because we're falling over backwards faster than the speed of sound. तो आप देख सकते हैं इसमें खाली जो एटमॉस्फेयर का जो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके और सूर्य के बीच में जो एटमॉस्फेयर है वो भी मतलब एक डेक बना लेता है, उसके पीछे भी जो है सूर्य जो है वो छुप जाता है। लेकिन हमें इन लोगों ने ऐसा बिलीव करवाया है कि भाई हम जो है घूमती गेंद के ऊपर पीछे की तरफ गिर रहे हैं और इसलिए हमें सूर्यास्त दिखता है। Dave, if this like sun is going away, one may ask like why is the size of the sun is not going smaller That's a great. that much? So here we go. So we're going to do this the same way. Here's a man standing here, and here is a train, which is right at his eye level. And as the train goes away, due to perspective, it gets smaller. Go ahead. देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है पर्सपेक्टिव की वजह से स्मॉल होती जा रही है, जबकि इसके आई लेवल पे थी तो वो स्मॉल होती जा रही है। Okay. So the train gets smaller, and that's due to perspective. However, this is a terrestrial object, right? It's a hallway. These lines are all parallel, but look here. These look like they're going down, but they're really all parallel. Go ahead. तो आप देख सकते हैं जिस एंगल से हम ये देख रहे हैं लाइंस, ये सभी लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन जब हम इस एंगल से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर की जो लाइंस है वो नीचे की तरफ जा रही है, मर्ज हो रही है, लेकिन असल में सभी हैं पैरेलल ही। Your perception sees them going down, but you know that they're parallel because this is a physical hallway. So again, this is how we see, but they are parallel. These are almost straight down here. Go ahead. तो आप देख सकते हैं सभी लाइंस तो पैरेलल हैं, लेकिन जैसी जो ऊपर की लाइंस हमें ऐसे दिख रहा है कि बिल्कुल नीचे जा रही हैं ऐसा, लेकिन असल में हम हमें रियलिटी में पता है कि सभी पैरेलल लाइंस हैं। Okay. So let me just go a little farther here. And so here is the sun as it goes away, and it looks like it's going down, just like those lines. And here is a view from behind the viewer. This is a side view. No one ever really sees this, but this is what he sees. And what he sees is the sun is going away, and it looks like it's going down. Okay? Go ahead.
तो इसमें आप देख सकते हैं दो व्यू आपको नजर आ रहे हैं सूर्यास्त के। जो लेफ्ट वाला व्यू है वो है कि भाई जो आदमी जो देखता है कि सन नीचे जा रहा है, यानी कि आदमी के पीछे अगर आप खड़े हो तो वो व्यू है लेफ्ट वाला। और राइट वाला व्यू आप देखोगे ये साइड का व्यू है जो कोई देखता नहीं है। और असल में मतलब जैसा आपको दिखाया था हमने इससे पहले वाली तस्वीर में कि जो लाइंस थी वो थी तो सभी पैरेलल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल थी, लेकिन उस एंगल से हमें ऐसा नजर आ रहा था कि वो नीचे जा रही थी। तो ये ऐसा मतलब ये व्यू है जो हम देख नहीं पाते हैं। All right. So now I'm going to make an analogy. We have the train car, and if we move the train car up high, it's already small. Okay. And as it goes away, it doesn't get any much smaller, maybe a tiny little bit, but not much. Okay. Go ahead. तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो ट्रेन है ना ऊपर जब ले गए हम तो इसका साइज छोटा हो गया, बट जैसे ही इधर दूर जाती है तो साइज में उतना फर्क नहीं आता है। All right. So it doesn't get any smaller because it's already been reduced. So right here, I have a wiffle ball, and then 6 feet away, there's another one, and it's much smaller due to perspective. Go. तो आप देख सकते हैं कि दोनों का साइज सेम है, लेकिन पर्सपेक्टिव की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि जो 6 फुट दूर जो बॉल है वो कितनी छोटी है। Okay. So that end, that's like the train on the ground. You got the train close and far, and it gets smaller. But if we lifted that up, I'm going to lift the camera straight up above this ball. Okay. And as I lift the camera up, what we see, and I'm not getting any closer to this, the balls become almost the same size. So if I rolled this ball along this track, it wouldn't get much smaller. It wouldn't shrink very much. Go ahead. हाँ, तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे ही कैमरा को ऊपर उठाया तो भाई दूसरा जो पर्सपेक्टिव हमने देखा तो पता लग गया हमें कि दोनों जो बॉल्स थी उनका साइज बिल्कुल सेम है। और उसके बावजूद भी अगर आप मतलब उस एंगल से अगर आप देखोगे और इधर वाली यानी कि पास वाली जो बॉल है उसको दूसरी बॉल की तरफ भी ले जाओगे तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो ये रीजन है कि भाई सूर्य जो है हमें जब दूर भी जाता है तो साइज में उतना श्रिंक होता हुआ नजर नहीं आता है। Right. So the question is, there is a little bit of a difference in the size, but when you are looking at the sun near the horizon, you're looking through all of the atmosphere. When you're looking at the sun up in the air, you're looking through a little bit of atmosphere. When you're looking up, you're looking through this much atmosphere. When you're looking across, you're looking through all the atmosphere, right? And that atmosphere acts like a lens. So as the sun is getting smaller, it will reflect, it'll magnify it and make it look a little bigger sometimes. Go ahead. जैसे जो सूर्य है वो क्या कि जब आप उसे छुपता हुआ देखते हैं तो पूरा बीच में एटमॉस्फेयर काफी जो लेयर है वो काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन जब सूर्य ऊपर होता है स्काई की तरफ तो एटमॉस्फेयर काफी थिन रहता है। तो इस वजह से जब जब आप हॉरिजॉन्टल की तरफ देखते हैं, हॉराइजन की तरफ देखते हैं सनसेट को, तो बीच में क्योंकि एटमॉस्फेयर है वो लेंस की तरह काम करता है जो कि उसे मैग्नीफाई कर देता है, इसलिए हमें वो नीचे जाते टाइम कभी कभी उसे मैग्नीफाई कर देता है। So this was filmed in Afghanistan on a very cool, dry. I'm not sure it was cool, but it was very dry. And the sun is getting smaller as it's going away. It's not going down. It should be going down, but it's clearly just going away, getting smaller. There's a famous American song by the Beatles called "The Fool on the Hill," and the lyrics say, "The fool on the hill sees the sun going down, but the eyes in his head see the world spinning round." So they kind of know in music. Go ahead. तो इसमें आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की ये वीडियो फुटेज है और यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो काफी ड्राई था, तो यानी कि एटमॉस्फेयर में काफी मतलब ऐसा बीच में कम एटमॉस्फेयर था, तो उस वजह से उसने मैग्नीफाई नहीं करा। इस वीडियो में हम देख सकते हैं जैसे ही सूर्य दूर जा रहा है क्लियरली हमें दिख रहा है, दूर जाते हुए उसका साइज भी कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उसने उस टाइम उसने क्योंकि ड्राई एटमॉस्फेयर था तो उसने मैग्नीफाई नहीं करा होता। लेकिन नॉर्मली क्या होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर काफी बीच में रहता है, ड्राई एटमॉस्फेयर मतलब ड्राई नहीं रहता, तो उस वजह से हमें काफी मैग्नीफाई नजर आता है वो, मतलब इसलिए हमें साइज उसका छोटा नहीं नजर आता। There's also another thing. When you're looking at the moon or the sun on the horizon, it looks bigger than it actually is. Now, the sun, it's hard to look straight at the sun because of the glare, but the moon is a lot easier. So the next time there's a full moon, you know how you see the full moon on the horizon, you're like, wow, it's so big. And then you take a picture of it and it looks very small. Okay.
It's not that big. It's your mind that's fooling you. And what you can do, this sounds crazy, turn around backwards, look at the moon upside down through your legs, and it will look small because it short circuits your mind and the illusion is broken. तो आप मतलब दिस वाज अ ब्यूटीफुल पॉइंट लाइक द मून वन। तो डेव बता रहे हैं कि भाई आप मून को जैसे होराइजन पे आप देखोगे, तो होराइजन पे सन या मून होता है तो वो उसका साइज हमें बड़ा नजर आता है। और वो इसलिए है क्योंकि जैसे सन को तो आप इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ग्लेयर ज्यादा होता है। तो मून राइज आप कभी देखना, मून को जब मून उदय होता है, मून जब राइज कर रहा होता है तो कितना बड़ा नजर आता है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि हम एटमॉस्फेयर की तरफ देख रहे होते हैं, बीच में काफी सारा एटमॉस्फेयर रहता है, जिस वजह से मैग्नीफाई हो जाती है चीजें। और अगली बार आपको क्या करना है कि आपको क्या मुर्गा बन के सूर्य चंद्रमा को देखना है, तो आपको साइज छोटा नजर आएगा। उल्टा ऐसा आप सिर झुका के ऐसा देखोगे तो वो इसलिए होता है क्योंकि माइंड को ऐसा शॉर्ट सर्किट कर देता है, वो इमेज एक मैट्रिकल कर देती है। Here's an example of atmospheric magnification, right? We have this is representing the atmosphere. And as we move away or move things away, it looks like the ship is going down, but it's still on the table. It's still on this perfectly flat table, right? This is how things appear to disappear over the horizon. तो इसमें इन्होंने मतलब जो एटमॉस्फेयर का जो वो रहता है उसका एग्जांपल देने की कोशिश करी है, कि बीच में ग्लेंस लगाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर हम सी करते हैं। तो जब ये चीजें हमसे दूर जा रही हैं, इस वीडियो में आप देखोगे जैसी वो वस्तु हमसे दूर जा रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे जा रही है, लेकिन वो खाली उस फ्लैट टेबल के ऊपर ही सिर्फ दूर जा रहा है हमसे। Yeah, not just another example. Looks like the sun's going down. It's just pulling away. इसमें आप देख सकते हैं कि ये भी फ्लैट टेबल के पीछे खाली से दूर ले जा रहे हैं, और हमें ऐसा कैमरा से ऐसा लग रहा है, जब हम इस एंगल से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि सन जो है नीचे जा रहा है, लेकिन असल में वो खाली दूर जा रहा है। Um, let's go back to perspective for a moment. So all of these streetlights are at the same height, but due to perspective, they look like they're going down. Okay, so here we have a man, and his horizon's over here, and you have a cloud above him. Go ahead. आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक साइड व्यू हमने दिखाया है, ये इसका हॉराइजन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके ऊपर एक क्लाउड है। Right. And so if I put a whole bunch of clouds in the sky and I move them far away, they look like they're going down, but they're all sitting at the same level. And then 20, 30 miles away, they will literally merge with the horizon. Okay. Go ahead. साइड व्यू से हम देख सकते हैं कि अगर हम और भी क्लाउड्स को नजर इसमें लगा दें, तो बाकी जो क्लाउड्स है वो ऐसा लग रहा है कि भाई इससे हॉराइजन से मिल रहा है, लेकिन असलियत में है वो सभी क्लाउड्स जो हैं एक ही लेवल पर है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। So if I pulled a string from his eye to that cloud, he would see that string going straight up, almost straight up in the air. But if I drew a line or pulled a string from his eye to this cloud over here, this man would see the string going parallel over the water to the cloud. Go ahead. तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर एक इससे इस व्यक्ति से और इस क्लाउड के बीच में एक रस्सी को लगा दिया जाए, एक स्ट्रिंग को लगा दिया जाए, तो वो व्यक्ति ऐसा देखेगा कि भाई क्लाउड उसके बिल्कुल सिर के ऊपर नजर आएगा, लेकिन जब वो सामने उसी क्लाउड को देखता है तो वो बिल्कुल से सीधा देखता है, क्योंकि वो असल में पर्सपेक्टिव की वजह से जो क्लाउड था वो हॉराइजन पे मिक्स हो गया था, मर्ज हो गया था। So, what would happen if you were standing underneath this cloud and could see this string? Would you see a string going level across the water? No, you would see a string high up, sloping down to this man in the distance. हाँ, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला बंदा है, इसे तो वो क्लाउड बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ नजर आता है, लेकिन अगर आप उस क्लाउड के नीचे जाके खड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि वो क्लाउड तो बहुत ऊपर है। तो उससे समझ में आती है कि भाई हमारी आंखें किस प्रकार से देखती हैं दूर की चीजों को। So, if you're so you're underneath the cloud, right? We'll extend this guy's view, right? So you see this line going down. This man sees a line going straight across because this cloud looks like it's on the horizon. So this cloud is blocking his view of anything that goes on this side of the line, right? So as the sun moves across the sky, for this man, he's going to see the sun
get blocked by where this cloud is. So he will not be able to see anything beyond that. Go ahead. इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ साइट आपको नजर आ रही है, ये उस बंदे की वजह से है, जो कि जैसे जो राइट वाला जो बंदा है उसकी लाइन ऑफ साइट हमने दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जो लेफ्ट वाला बंदा है वो कैसे देखेगा? जब सूर्य घर से लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होगा तो वो कुछ भी देख नहीं पाएगा। जैसे ही सूर्य उस लाइन से क्रॉस होगा तो वो कुछ भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसकी लाइन ऑफ साइट थी। Remember, from his point of view, that line is pointing at the cloud right here, which looks like it's at the horizon. And he sees the sun going apparently down. It's just going farther away. And it goes beyond where he can see. That is being blocked because this cloud that looks like it's at his eye level is thousands of feet above his eyes. And the sun is just going beyond it. तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट वाले बंदे की लाइन ऑफ साइट आपको दिखाई है, और इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही वो सूर्य इधर से जा रहा है तो वो क्लाउड्स की वजह से ब्लॉक, क्लाउड्स में पीछे चला गया। और जबकि वो असलियत में जो क्लाउड था वो तो भी था, बहुत ऊंचा था, लेकिन वो उसे ऐसा नजर आ रहा था कि वो जमीन से चिपका हुआ है। तो ये तरीका है जिससे हमारी आंखें देखती हैं। This line is level, but we're looking at it from a terrestrial point of view, right? So let me get back here. So this line is level, and as I move it away, it looks like it's going below. This is high above the camera length. This is a real sunset, okay? It's going beyond the atmospheric deck of opacity, beyond the clouds. It's going beyond it. That's all it's doing. And it's from your point of view that you see it that way. Go ahead. तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है राइट वाले हमने दिखाए, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है लाइन, और जो बल्ब को हम ऐसा आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो सेम, खाली हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रखते हुए उस बल्ब को जो है ले जा रहे हैं आगे पीछे। लेकिन हमें ऐसा ग्राउंड पे जो कैमरा लग रहा है उससे हमें ऐसा दिख रहा है कि जब हम उसे दूर ले जा रहे हैं तो वो असल में नीचे छुप रहा है किसी चीज में, एटमोस्फेयर मतलब किसी चीज में छुप रहा है वो। तो असल में सच्चाई ये है कि वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन नीचे वाले कैमरा एंगल से हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज में छुप रही है। This is that same horizontal line viewed from a celestial perspective, same height. Go ahead. तो इससे पहले जो हमने आपको वीडियो फुटेज दिखाया था तो वो ये रस्सी है जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो लाइट है सेम मतलब हॉरिजॉन्टल में चल रही है, सेम मतलब हॉरिजॉन्टल हाइट को मेंटेन करते हुए चल रही है, खाली दूर जा रही है। लेकिन नीचे वाले कैमरा एंगल से हमें ऐसा लग रहा है कि भाई, इस कैमरा एंगल से हमें ऐसा लग रहा है कि जो लाइट है वो नीचे की तरफ जा रही है, जबकि वो सिर्फ दूर जा रही है। And so this could be clouds or a mountain or whatever, but this is above it, and we can see that the sun is moving level and never going below it. Go ahead. तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि भाई जो सन है वो हमने मिमिक करने की कोशिश करी है, और वो कभी भी नीचे नहीं जा रहा है, वो सिर्फ दूर जा रहा है। लेकिन नीचे वाला जो कैमरा था उससे हमें ऐसा लग रहा है कि वो इन चीजों में छुप गया, जो बोतल रखी हुई है इनके पीछे छुप गया। Now I have a camera on the counter watching the same thing from a terrestrial point of view. तो इसमें आप देख सकते हैं, जब इसी सेम चीज को आप नीचे रखा हुआ जो काउंटर पे कैमरा रखा हुआ उससे देखोगे तो कैसा आपको नजर आएगा? बिल्कुल सनसेट की तरह नजर आएगा, जैसे सनसेट हमें नजर आता है कि बिल्कुल सनसेट हो रहा है, लेकिन असल में वो खाली दूर जा रहा होता है। As it goes away, it now looks like it's going below this. This line looks like it's going down, but it's a level line. This looks like it's at his eye level. It's just going beyond it, and you can't see over it. Everything gets squished into the horizon to fool you. But सकते हैं कि भाई खाली दूर जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये इसके नीचे जा रहा है, और ये एटमॉस्फेयर डेक हो सकता है, पहाड़। this line is level. रियल सनसेट होता है। Sun did the अब कंपेयर कर सकते हैं अपना। same thing. It's just going behind here. Not going below the curve of the earth. It's just going beyond your horizon. तो इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं सूर्य खाली एटमॉस्फेयर डेक के पीछे जा रहा है, ना कि वो कर्व के नीचे जा रहा है जैसा ये लोग बोलते हैं। There you go. There's your sunset perspectives lesson for the day. Beautiful, beautiful. Do you have my app? Yeah, I have it. And there's starting to get some more people in India. Let's take a quick look.
My app developers are in India. Not so many yet, but we're getting there. We're getting there. We'll get fast. We need more people to get the app and let them know that they can find my stuff at flatearthdave.com. या डेफिनेटली। तो ये आप डेव का जो फ्लैट अर्थ डेव पे आप फाइंड कर सकते हैं, और ये प्ले स्टोर पे भी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। And और इसमें जब आप इंडिया के सेक्शन में जाओगे, आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक, देन व्हेन यू विल गो इन द इंडियन सेक्शन, you can find like this playlist also. we have some videos. I need more videos. If you want to send Yeah. videos to add to that list, I'm happy to do that. If you want to make a playlist of the best flat Earth videos in India, send me that list and I'll add it to the app. Okay, I'll do that. Okay. I'll do that. And anything else? We're coming to the end here. I think it's enough, very much enough for today. Right. Awesome. Thanks so much. Beautiful to have you. Beautiful to have you. For having me. Awesome. Keep spreading the good word. Let everyone know that they need to let everyone go. There's a lot of tyranny going on in the world. They're trying a lot of nonsense. And if we're lost in space, spinning out of control, not knowing who we are, not knowing the true power that we have, then we're going to go back into crazy world again. We want to free ourselves from these people that are enslaving us. बिल्कुल बिल्कुल। तो देव का ये संदेश है कि भी हमें ये जो प्रोपोगेंडा है इससे फ्री होना है, और इनका खाली जो पावर है इनके पास, ऐसे हमें छीननी, अपने पास लाने का। Awesome. Awesome. Great. Thanks so much. Thanks for having me on. And the last thing, I want to go back to the moon landing. The reason they have all these countries doing their space stuff is to make pride for the country. Because when you have pride for your country that you love, because that's where you live, it's hard to break that spell. And then if somebody goes, that's fake, then they're like, you're a horrible person. And they get us fighting. They want us fighting with each other. That's why they do this. That's why they made it so simple to see that for other people to say that it's fake. And then a lot of people in India that are unaware of the massive deception of the world, then they have us all fighting. That's how they want us. They don't want us coming together like you and I are coming together here. Very important. They want to separate us, right? They want to muzzle us. They want us not being near each other. They want us not talking to each other, because they don't want us finding out that we have the true power. Awesome, man. Awesome. Great. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Send me a link when you put this up. I'll share it. Okay. Okay. Definitely. All right. Have a nice evening. Yeah. Okay. All right. Bye-bye.